Good morning, everyone. Welcome to the morning call. We start with technical and derivatives outlook. So in yesterday's session, we saw that Nifty saw some profit booking and it made a low of 18,531. But then there was a recovery during the closing hour and Nifty has almost closed flat by a positive 5 points. The close is at 18,599. So we are observing that for the last 6 to 7 trading sessions, the Nifty is in range. And we were talking of the breakout on the higher side, but then that will be triggered when this weekly high, this current week's high, which is at 18,640 levels, will be taken out. So looking at the SGX Nifty and the overall global market, we do believe that today may be a one upside tick in the market and there can be a range breakout is what we believe. So above 18,600, that's a cash level. So once we sustain about this level, then the next level to watch is 18,800 and then 19,000. At lower level, 18,500 and 18,400 are the crucial support levels from the intra-week point of view. And directionally, 18,000, not directionally, then the major support is at 18,200 and directionally 17,800. So there are multiple supports on the lower side. We are talking of a bounce back trade range breakout. So bias is positive. Decline should be viewed as a buying opportunity. Sooner or later, during the end of this month, maybe post that, we should be heading toward 19,000, 19,200. So this is the directional view. So bias is positive. Decline should be viewed as a buying opportunity. So in yesterday's session, majorly the cement, pharmaceuticals, real estate, and automobile stocks were the counters which show the strength, while technology and power stocks showed some profit booking. So coming to the Bank Nifty also there was a recovery in the Bank Nifty. Bank Nifty was up by 62 points, and it has closed at 44,164 level. The stock specific Axis Bank and Kotak Bank were the leaders, whereas there was a profit booking in the Federal Bank and ICICI Bank in yesterday's session. So, looking at the chart pattern and the derivatives data, there has been continuous long built up in Bank Nifty for the last 3, 4 trading session. So this defines that sooner or later there can be a uptick in the positive uptick in the Bank Nifty. Bank Nifty, the range is very small, 43,500 and 44,500. So this is a 1,000 point range for the Bank Nifty. So whenever this 44,500 level is taken out, there is a high probability we will see some short covering in the market. And if Bank Nifty approaches 46,000 during the end of the month, we won't be surprised. So bias for both the indices is positive. Realty and auto stocks is likely to outperform in today's session also. Stocks like Grasim and Oberoi Realty is looking positive on charts, followed by Mahindra CI. There are many chemical stocks which have come in the momentum, so that can be viewed from the 2 to 3 days kind of perspective. Ultratech and TVS Motors are looking positive on charts. Coming to derivatives report, so we have seen a long unwinding in yesterday's session in the Nifty futures to the tune of minus 3.06%. The put call ratio has also gained from the one ratio to 1.01. The major additions in the call option was seen at 18,600 and 18,800. So this is the resistance from the derivatives point of view. And in the put option, it was seen at 18,500, same 18,500 and 18,600 strike price. Coming to Bank Nifty has seen a long build up to the tune of 0.29%. The put call ratio has also seen a gain from 0.87 to 0.97 percent ratio. So this is a positive. The major addition in the call option was seen as 44,200 strike price, while on the put front it was 44,000. So this will act as a support and resistance from the derivatives point of view. Coming to index data, so yesterday in index future, the FISI went short close to 10,456 contract and net they are short by 10,000 contracts. So this has to be kept in a watch. The long short ratio is at 46%. So as of now, the data is negative. The few stocks which have seen a long built up in yesterday's session were JK Cement, Maruti, ACC, and Syngene, whereas the short built up was seen in Emphasis, IEX, Persistence, and uh, Chambal Fertilizers.
Lastly, we have a cautious view on a consumer durable. Stocks like Dixon, Voltas, and Havels are not doing good. So any buying should be avoided at current levels. We might relook it at when we see a clear technical direction. So that's all from my end. I'll hand over to Bhavesh sir for more research updates. Thank you. Hi, Brijesh. Good morning, team. This is Archana this side. So, a few updates from my side. So, starting with Torrent Power, the company has signed MOU with Government of Maharashtra to develop 3 pump storage hydro projects of 5,700 megawatt capacity with an investment of about 27,000 crore. Torrent plans to execute these projects over next 5 years. So, this bodes well for the company's earnings growth going ahead. On GMR Airports Infra, the company has divested 8.18 lakh square feet of warehouse facility by selling 100% stake in unit GMR Hyderabad International Airport to ILP Core Ventures. The resulting cash flows will help in expansion and other growth opportunities at Hyderabad Airport, land development and portfolio. On Engineers India, the company has won orders worth 5.05 crore from National Aluminium Company for providing consultancy services for updating project report for one of its mines. It got an order worth rupees 15 crore from Jindal Steel and Power to supply basic engineering and detail engineering for direct reduced iron plant in Odisha. On GR Infra Projects, the company's unit GR Haspur Badal Highway executed the concession agreement to construct 6-lane Surat, Nasik, Ahmedabad, Solapur, Maharashtra and Karnataka border greenfield stretch on hybrid annuity mode at a bid project cost of 872 crore. Again, that is positive development on GR Infra Projects front. And lastly, on Chalet, the company has launched its second hotel in Hyderabad, the Western Hyderabad High Tech City. The hotel is managed and operated by an all-women team. The addition of this 168 key property takes the total number of rooms under the company's portfolio to 2,800. And we like Chalet amongst the domestic hospitality space given its inventory addition in hotel and commercial segment and the value unlocking opportunities in the Koramangala project, which is ongoing in Bangalore. We believe the stock is in sweet spot to benefit from the healthy demand outlook in corporate travel in near term. We have buy rating on the stock with a target price of 457. So that's it from my side. Now I hand it over to Shantanu for further research updates. Thank you. Now to Shantanu. Yeah, thank you, Archana ma'am. So, starting with the first update, which is regarding Wipro, where the technology services and consultancy company launched a Wipro Industry Innovation Experience for financial services solutions on Microsoft Cloud. Microsoft and Wipro will develop new solutions to help financial services clients to accelerate growth and deepen the client relationships. The next update is on Deepak Fertilizers, where the subsidiary Performance Chemiserve has raised rupees 900 crores via the issuance of non-convertible debentures on a private placement basis to qualified institutional buyers. NCDs are to be listed on BSE Limited. The next update is on L&T, where the company on Tuesday said that its subsidiary has bagged significant orders in the domestic market. The buildings and factories business of L&T Construction has recently secured engineering, procurement, and construction orders in India. The orders have been received from a reputed developer to construct commercial towers at 2 locations in Mumbai. The scope of the work includes 4 level basements and 2 towers of 70 floors and 50 floors, respectively, to be done in 40 months. The other location will have 4 level basements and 2 towers of 19 floors, each to be completed in 35 months. As per the company, significant orders are in the range of rupees 1,000 crore to rupees 2,500 crores. IFB Industries Societe Generale, the Europe-based financial services group, has bought 3 lakh shares or a 0.74% stake in the manufacturer of household appliances, machine tools, and automobile parts. These shares were bought at an average price of rupees 800 per share. The next update is on KEC International, where the transmission tower manufacturer has got 2 orders for train collision avoidance system
that is the Kavach system, worth rupees 600 crores. CEO Mr. Vimal Kejriwal said that while they haven't seen many tenders yet, there is a tremendous scope for more. The KEC orders come after the recent tragic three-train collision in Balasore, Odisha, which has brought attention to the implementation of TCAS systems. The next update is on Bank of Maharashtra, where the lender has closed the issue period of its QIP, that is qualified institutional placement, and has approved the issue price of rupees 28.50 per equity share, which is at a discount of 4.94% to the floor price of rupees 29.98 per equity share determined. The next update is on Bank of Baroda, where according to a report, the debenture holders of Reliance Home Finance have issued a legal notice to the state-owned Bank of Baroda, accusing it of engaging in foul play and disregarding the directives issued in a recent Supreme Court ruling. Varun Beverages, the board of directors has fixed June 15th as the record date to determine eligible shareholders entitled to the stock split. The next update is on Masgao Dock, when Germany and India are closing in on a deal to build diesel submarines for Indian waters. ThyssenKrupp, AG's Marine Arm, and India's Masgao Dock Shipbuilders Limited are likely to jointly bid for an estimated $5.2 billion project to build 6 submarines for the Indian Navy. The final update is that BSC Limited has announced a revision in circuit limit for a total of 477 stocks on June 6th, including Adani Transmission, Adani Green Energy, Adani Wilmar, Adani Power. As per the notice published by the exchange on its website, the country's oldest stock exchange has increased circuit limit for total 232 stocks to 10% from 5%, including Adani Transmission, Adani Green Energy, Adani Wilmar, Ansel Housing, Shriram Asset Management Company, GVK Power, and PC Jewelers. Further, Adani Power, Kamdhenu, Rail Vikas Nigam, and EKI Energy Services will have a new circuit limit at 20% from 5% earlier. So this was all from my side. Now handing it over to Kshitija ma'am. थैंक यू गुड मॉर्निंग हम लोग ये कॉल को एक बार एंड में कर लेते हैं फर्स्ट अपडेट है वो टोरेंट पावर के ऊपर है टोरेंट पावर कंपनी है उन्होंने एमओयू साइन किया है गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र के साथ जो बेसिकली डेवलप करेंगे 3 पंप स्टोरेज हाइड्रो प्रोजेक्ट अराउंड 5700 मेगावाट की कैपेसिटी होगी महाराष्ट्र में और इसकी जो इन्वेस्टमेंट है वो अबाउट 27,000 करोड़ की है और टोरेंट का कंपनी का प्लान है कि वो एग्जीक्यूट करेंगे ये प्रोजेक्ट 5 इयर्स में द नेक्स्ट अपडेट है जीएमआर इंफ्रा एयरपोर्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर कंपनी ने डाइवेस्ट किया 8.18 लाख स्क्वायर फीट वेयरहाउस फैसिलिटी और जो सेल करेंगे 100% स्टेक यूनिट जीएमआर हैदराबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट जो सेल करेंगे ILP कोर वेंचर्स को और ये बेसिकली उनका जो कैश फ्लो है वो हेल्प करेगा एक्सपेंशन के लिए और अदर ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज हैदराबाद एयरपोर्ट लैंड डेवलपमेंट पोर्टफोलियो में द नेक्स्ट अपडेट है इंजीनियर्स इंडिया के ऊपर कंपनी को एक ऑर्डर मिला है उसकी जो वर्थ है वो 5.05 करोड़ की है और ये ऑर्डर उनको नेशनल एल्यूमिनियम कंपनी से मिला है जो बेसिकली प्रोवाइड करेंगे कंसल्टेंसी सर्विस अपडेटिंग प्रोजेक्ट्स रिपोर्ट ऑफ पोतगनी बॉक्साइट माइंस में और ये ऑर्डर है उसकी जो वर्थ है और एक ऑर्डर मिला है जिंदाल स्टील पावर से और उसकी जो वर्थ है वो 15.50 करोड़ है और इसमें वो सप्लाई करेंगे बेसिक इंजीनियरिंग एंड डिटेल इंजीनियरिंग जो डायरेक्ट रिड्यूस आयरन और प्लांट उड़ीसा में ही द नेक्स्ट अपडेट है जीआर इंफ्रा प्रोजेक्ट्स के ऊपर कंपनी का जो यूनिट है जीआर हसपुर बदादाल हाईवे उन्होंने एग्जीक्यूट किया है कंसेशन अग्रीमेंट कंस्ट्रक्ट करेंगे 6 लेन सूरत नासिक अहमदनगर सोलापुर महाराष्ट्र कर्नाटक ये जो बॉर्डर है वो ग्रीनफील्ड स्ट्रेच करेंगे हाइब्रिड एन्युटी मोड पे और इस जो प्रोजेक्ट कॉस्ट है उसकी जो बिड है वो अराउंड 872.17 करोड़ है नेक्स्ट अपडेट है शालिया होटल के ऊपर कंपनी ने लॉन्च किया उनका सेकंड होटल हैदराबाद में और ये वेस्टर्न हैदराबाद हाईटेक सिटी है और ये होटल बेसिकली मैनेज एंड ऑपरेट होगा ओनली ओन वुमन टीम से और ये एडिशनल ये 168 की प्रॉपर्टी है
टोटल नंबर ऑफ रूम्स है कंपनी के पोर्टफोलियो में 2802 कीज इंक्लूडिंग सब्सिडरीज, और शाले डोमेस्टिक हॉस्पिटैलिटी में जो स्पेस है उसमें उनका जो इन्वेंटरी एडिशन है होटल का और कमर्शियल सेगमेंट का, और वैल्यू अनलॉकिंग अपॉर्चुनिटी है कोरमंगला प्रोजेक्ट में। सो ये बिलीव है कि स्टॉक स्वीट स्पॉट में है और बेनिफिट होगा हेल्दी डिमांड से, आउटलुक से और कॉर्पोरेट ट्रैवल जो नियर टर्म में है उसके कारण। तो ओवरऑल हम लोग पॉजिटिव है स्टॉक के ऊपर, बाय रेटिंग है लॉन्ग टर्म टाइम फ्रेम से, टारगेट प्राइस है 457। देन नेक्स्ट अपडेट है बैंक ऑफ बड़ौदा के ऊपर। जो डिबेंचर्स होल्डर्स है रिलायंस होम फाइनेंस लिमिटेड, उन्होंने इशू लीगल नोटिस सेंड की है बैंक ऑफ बड़ौदा को, जो एक्यूजिंग करेंगे एंगेज इन फोल प्ले और रिगार्डिंग डायरेक्टिव्स इशू है रिसेंट सुप्रीम कोर्ट रूलिंग के। देन विप्रो के ऊपर अपडेट है टेक्नोलॉजी सर्विस एंड कंसल्टेंसी जो विप्रो कंपनी है उन्होंने लॉन्च किया विप्रो इंडस्ट्री इनोवेशन एक्सपीरियंस फॉर फाइनेंशियल सर्विस सॉल्यूशन माइक्रोसॉफ्ट क्लाउड में, और ये माइक्रोसॉफ्ट एंड विप्रो डेवलप करेंगे न्यू सॉल्यूशन जो हेल्प करेगा फाइनेंशियल सर्विस क्लाइंट्स को और जो एसिलेट करेगा ग्रोथ एंड डीपन क्लाइंट रिलेशनशिप। दीपक फर्टिलाइजर एंड पेट्रोकेमिकल्स कॉर्पोरेशन है उनकी जो सब्सिडरी है परफॉर्मेंस केमिसर्व्स, उन्होंने रेज किया 900 करोड़ वाया इशुएंस ऑफ नॉन कन्वर्टेबल डिबेंचर्स एनसीडी ऑन प्राइवेट प्लेसमेंट बेसिस पे, और ये क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल बायर्स है और एनसीडी आर टू बी लिस्टेड होगा बीएसए लिमिटेड पे। एलएनटी कंपनी है उन्होंने कल बोला कि सब्सिडरी है उनको सिग्निफिकेंट ऑर्डर मिला है डोमेस्टिक मार्केट से। सो बिल्डिंग फैक्ट्रीज है बिजनेस एलएनटी कंस्ट्रक्शन का रिसेंटली सिक्योर्ड इंजीनियरिंग प्रोक्यूरमेंट कंस्ट्रक्शन ऑर्डर्स इंडिया में से मिली है, और ये जो ऑर्डर्स है रेप्यूटेड डेवलपर्स कंस्ट्रक्शन जो कमर्शियल टावर्स है 2 लोकेशंस में मुंबई से वहां से मिले हैं, और इसका जो स्कोप है वर्क का वो इंक्लूड करता है 4 लेवल बेसमेंट 2 टावर्स 70 फ्लोर्स के एंड 50 फ्लोर्स के, एंड ये होगा 14 मंथ्स में। अदर लोकेशन है 4 लेवल बेसमेंट एंड 2 टावर्स का 19 फ्लोर्स ईच, और ये कंप्लीट होगा 35 मंथ्स में। एज पर जो कंपनी है उनके अनुसार सिग्निफिकेंट ऑर्डर्स की जो रेंज है वो 1000 करोड़ से लेकर 2500 करोड़ है। द नेक्स्ट अपडेट है आईएफबी इंडस्ट्री है जो सोशियल जनरल यूरोप बेस्ड फाइनेंशियल सर्विस ग्रुप है, उनको उन्होंने बॉट किया 3 लाख शेयर्स दैट इज 0.74% स्टेक मैन्युफैक्चर ऑफ हाउसहोल्ड अप्लायंस मशीन टूल्स ऑटोमोबाइल पार्ट्स में, और ये शेयर से बॉट होगा एवरेज प्राइस 800 पर शेयर। देन केसी इंटरनेशनल है ट्रांसमिशन जो टावर मैन्युफैक्चर केसी इंटरनेशनल है उनको 2 ऑर्डर्स मिले हैं ट्रेन कोलिजन अवॉइडेंस सिस्टम TCAS इन कवाचा सिस्टम वर्थ जो है उसकी 600 करोड़ की है। सीईओ है उन्होंने बोला है कि वो मतलब ये मैनी टेंडर्स है उसमें से ये ट्रिमेंडस स्कोप है, और केस के जो ऑर्डर्स है वो आफ्टर रिसेंट जो ट्रैजिक 3 ट्रेन कोलिजन बालासोर उड़ीसा में हुआ था उसके बाद वो अटेंशन पे आ गया है और इम्प्लीमेंटेशन होगा जो ट्रेन कोलिजन अवॉइडेंस सिस्टम का है उसके ऊपर। देन नेक्स्ट अपडेट बैंक ऑफ महाराष्ट्र है कंपनी, उन्होंने लेंडर है उन्होंने क्लोज किया है इशू प्राइस QIP के, और ये अप्रूव हुआ इशू प्राइस 28.5 पर इक्विटी शेयर, और इसका जो डिस्काउंट है वो 4.94% है फ्लोर प्राइस से जो 29.98 पर इक्विटी शेयर थी। देन वरुण बेवरेज कंपनी है उनकी बोर्ड की डायरेक्टर का मीटिंग फिक्स हुई जून 15 को, रिकॉर्डेड बेसिकली एलिजिबल जो शेयर होल्डर्स है स्टॉक स्प्लिट्स के लिए उसके जो एलिजिबल है उनके लिए रिकॉर्डेड है। देन माझगांव डॉक शिपयार्ड जो कंपनी है उसके ऊपर एक अपडेट है जर्मनी एंड इंडिया क्लोज करे डील जो बिल्ड करेंगे डीजल सबमरीन्स इंडियन वाटर्स में, और ये थाइसन ग्रुप एजी मरीन आर्म एंड इंडिया का जो माझगांव डॉक शिपयार्ड लिमिटेड से ये जॉइंटली बीट करेंगे। एस्टिमेटेड होगा इसकी वैल्यू $5.2 बिलियन प्रोजेक्ट के लिए, और ये 6 सबमरीन्स बिल्ड करेंगे इंडियन नेवी के लिए। BSE है उन्होंने अनाउंस किया कि रिवीजन सर्किट लिमिट टोटल 477 स्टॉक्स के लिए 6 जून को, उसमें इंक्लूडिंग अडानी ट्रांसमिशन अडानी ग्रीन एनर्जी अडानी विलियम और अडानी पावर है। जो नोटिस पब्लिश हुआ है वेबसाइट पे उसके अनुसार कंट्री के जो स्टॉक एक्सचेंज है उन्होंने जो इंक्रीज किया है सर्किट 232 स्टॉक्स का है 10% से 10% किया प्रीवियसली 5% था। उसमें इंक्लूडिंग अदानी ट्रांसमिशन अदानी ग्रीन एनर्जी अदानी विलियमर एनल्स हाउसिंग श्रीराम एसेट मैनेजमेंट JVK पावर एंड PC ज्वेलर्स, और इसके अलावा जो अदानी पावर कामधेनु रेल विकास निगम इकिया एनर्जी सर्विस उनको न्यू सर्किट लिमिट 20% का है जो
अर्लियर 5% का था. That's it from our end. Thank you everyone for joining the morning con call. Have a nice day.